The National Film Awards are given in 5 categories. Dada Saheb Phalke Award, feature films, non-feature films, best writing in cinema, and the most film-friendly state. These are the 5 categories in which awards are given, as you all know. The National Film Awards aim at encouraging the production of films of aesthetic and technical excellence and social relevance, contributing to the understanding and appreciation of cultures of different regions in the country in cinematic form, and therefore also promoting integration and unity of the country. The awards are being given in 28 categories in the feature film section, 22 categories in non-feature film section, and 1 category in best writing cinema, best writing on cinema. This year, there were 305 feature films received as entries in 30 languages. In the non-feature film category, 148 films in 20 languages from all over the country were received. Films in 15 languages, other than those specified in the 8th schedule of the Constitution, were received as entries. 24 books and 5 film critics competed for the Best Writing on Cinema Awards. The jury for Best Writing on Cinema Awards was led by Mr. Anant Vijay. The jury for non-feature films was chaired by award-winning filmmaker Mr. Chitrat Singh. The feature film section of National Film Awards jury was headed by eminent producer-director Shri Vipul Shah. As Mr. Vipul Shah had to leave in the afternoon, we have well-known cinematographer Mr. Dharam Gulati from the jury, who will be announcing the awards on his behalf. Mr. Dharam Gulati was also the regional panel chairperson of South 2, which screened films from Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. The awards in the feature film category are selected by a 2-tier jury, regional and central. 5 regional panels, East, North, South, South 2, have 5 members each, whose chairpersons are also members of the central jury. The central jury has 11 members, including the chairperson. The jury for non-feature films has 7 members, including chairperson, whereas jury on best writing on cinema has 3 members, including the chairperson. The jury viewed the films in New Delhi over a period of 1 month. Just to highlight the diversity of our beautiful country and the entries award in various languages, I would like to share that in addition to the Schedule 8 languages, we have also received entries in languages, in feature films, in languages of Dimasa, Gaddi, Gojri, Kanyar, Kangdi, Konkani, Maithili, Moran, Rabha, Rajbongi, Tulu, Romgemi, and in the non-feature film section, we had Bundelkhandi, Dangi, Karbi, and there were 2 films. One in a silent category, one was a silent film, and 1 film did not have any dialogue. So I will, before I invite the chairpersons of the 3 juries, we also have the announcement to make for the most film-friendly state. I will, on behalf of the chairman of the most film-friendly state jury, Mr. Priyadarshan, who could not be here available here today, and 2 members of the jury, Mr. G.P. Vijay Kumar and Mr. Amit Sharma. I'll be making the announcement with regard to the most film-friendly state in the country. The jury evaluated applications received from 13 states of the country.
In the most film-friendly state, special mention has been received by the states of Uttarakhand and Uttar Pradesh, and a certificate each will be given to them. The award for the most film-friendly state goes to Madhya Pradesh, who will be given a Rajat Kamal and a certificate. Now I will request the chairman of the jury for the best writing on cinema to release his results about the jury recommendations. धन्यवाद मैम। मैं अपने दोनों साथी जूरी सदस्य अलका साहनी और धनंजयन गोविंद के बिहाफ पर आप सबसे बात कर रहा हूँ। हम तीनों ने मिलकर कई सारी पुस्तकें पढ़ी, 21 जैसा कि मैम ने बताया, और जो बेस्ट क्रिटिक के अवार्ड के लिए एंट्रीज आई थी उनको देखा, और हम तीनों ने यूनानिमसली ये फैसला लिया, इस निर्णय पर पहुँचे कि बेस्ट राइटिंग में बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड इस बार किसी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हम तीनों को कोई भी एंट्री स्तरीय नहीं लगा, और इस लिहाज से इस बार सखेद सूचित करना पड़ रहा है कि बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड हम लोग किसी को नहीं दे पाए। वजह ये हो सकती है कि ये 2020 का पुरस्कार है और उस वक्त कोरोना अपने पीक पर रहा होगा, तो उस वजह से एंट्रीज नहीं आई। और अब हम बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा बुक्स पर आते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, जिसको स्पेशल मेंशन के नाम से भी जानते हैं हम, उसकी घोषणा मैं करता हूँ। पहला सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट MTA पुस्तकम मलयालम अनूप रामकृष्णन, मलयालम मनोरमा इज द पब्लिशर। और दूसरा काली वाइन कालीरा सिनेमा ओडिया सूर्या देव पक्षीघर प्रकाशने, इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देने की अनुशंसा हम लोगों ने की और उसकी घोषणा कर रहे हैं। और एक बात मैं बीच में ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पुस्तकें 21 आई थी उसमें तमाम भारतीय भाषाओं की पुस्तकें थीं, और जूरी के सदस्यों ने कुछ अपने मानदंड तय किए, कुछ तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के मानदंड हैं, और कुछ हम लोगों ने ये भी किया कि कुछ ऐसी भाषाओं का चयन भी किया जाए जिससे वहाँ के लेखकों का उत्साहवर्धन हो और वहाँ की फिल्मों के बारे में भी देश के दूसरे हिस्से को पता चल सके। तो ये काली पाइने कालीरा सिनेमा एक ऐसी ही किताब है जिसमें ओडिया क्लासिक्स के बारे में उन्होंने लिखा है। और अब समय हो गया है अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। ये किताब द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा पर है। किताब का नाम है द लॉन्गेस्ट किस, इंग्लिश में है। किशोर देसाई ने इसको लिखा है और वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने इसको प्रकाशित किया है। तो हमारी जूरी ने ये तय किया कि इनको ही दिया जाए, क्योंकि ये पुस्तक 10 वर्षों के रिसर्च और देविका रानी के खुद के लिखे हुए 400 पत्रों पर आधारित है, और ये किताब अपने आप में फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रेफरेंस के तौर पर काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I'll request Shri Chitrat Singh to announce the awards for the non-feature films. नमस्कार, थैंक यू। मेरे साथ जूरी में थे श्री M.K. भास्कर राव, श्री शिलादित्य सेन, श्री दिलीप सूद, श्री नकुल देव, श्री योगेश कुलकर्णी और श्री सत्यप्रकाश उपाध्याय। हमने तमाम फिल्में देखी और उसके बाद जिस निष्कर्ष पर हम पहुँचे वो है, सबसे पहले बेस्ट नरेशन वॉइस ओवर अवार्ड गोज़ टू शोभा थरूर श्रीनिवासन फॉर फिल्म Rhapsody of Rains, Monsoons of Kerala.
Rajat Kamal and rupees 50,000. Best Music Direction award goes to Shri Vishal Bharadwaj for 1232 kilometers मरेंगे तो वहीं जाकर. Rajat Kamal 50,000. Best Editing award goes to Anadi Ethle for Borderlands, Rajat Kamal and rupees 50,000. Best on-location sound recordist goes to film Jadui Jungle, on-location sound recordist Sandeep Bhati and Pradeep Lekhwar. Best Audiography award goes to re-recordist final mix track Ajit Singh Rathore for Pearl of the Desert from Rajasthan. Best Cinematography award goes to Nikhil S. Praveen for Shabdi Kunna Kallappa, a Malayalam film, Rajat Kamal and 50,000. Best Direction goes to Oh That's Bhanu, a documentary in English, Tamil, Malayalam and Hindi, Swarna Kamal. Best Film on Family Values goes to Kumkum Archan, producer Studio Filmy Monks, director Abhijit Arvind Dalvi. Best Short Film Fiction Film. Best Short Fiction Film goes to Kachi Chinutu from Assam. Award goes to Khanjan Kishore Nath, who is producer and director, both. A special jury award goes to film Admitted, director Ojasvi Sharma, Rajat Kamal and rupees 1 lakh. Best investigative film goes to The Savior, Brigadier Preetham Singh in Punjabi. Producer Akal Productions, director Dr. Paramjeet Singh Kattu. Best exploration / adventure film to include sports goes to Wheeling the Ball in English and Hindi. Producer Film Division, director Mukesh Sharma. Best educational film goes to Dreaming of Words, Malayalam, producer and director Nandan. Best film on social issues is shared by 2 films. One is Justice Delayed But Delivered in Hindi. Producer Mandeep Chauhan, director Kamakhya Narayan Singh. And the other film is Three Sisters. Producer Ratnaboli Rai, director Putul Rafe Mahmood. Best environment film goes to Mana Aru Manu, producer Directorate Manas National Park and Aranyak, director Deep Bhuyan. Best promotional film goes to Surmounting Challenges, producer Delhi Metro Rail Corporation Limited, director Satish Pandey. Best Science and Technology Film, On the Brink Season 2, Bats, producer The Gaia People, director Akanksha Sood Singh. Best Arts and Culture Film goes to Nadada Navneet, producer Department of Information Public Relations, Government of Karnataka, director Girish Kasarvalli. Best Biographical Film goes to Pabung Syam, producer Film Division,
Director Haubam Paban Kumar. Best ethnographic film goes to Mandal Ke Bol, producer Madhya Pradesh Tribal Museum, Bhopal. Director Rajendra Jangle. Best debut non-feature film of a director. Film is Paraya. Producer is MIT School of Film and Television, Pune, and director is Vishesh Iyer. Best non-feature film award goes to Testimony of Anna. Producer and director Sachin Dheeraj Mundigonda, Swarna Kamal, and rupees 1,50,000. That is all, my friends. Thank you very much. I will now request Mr. Dharam Gulati to announce the Feature Film Awards. थैंक यू मैडम। नमस्कार। जैसे मैडम ने कहा कि हमारा 2 tier सिस्टम रहता है सिलेक्शन का, एंड पहले 5 हमारे जोनल रहते हैं जहाँ पे फिल्म में पहले माइक इज़ ऑन। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? या आई एम ऑडिबल? ओके, मैं बता रहा था कि ये 2 tier सिस्टम क्या होता है। हमारे 5 जोन हैं जहाँ से फिल्में आती हैं, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। तो जो चेयरमैन जो होता है वो एक न्यूट्रल होता है और एक मेंबर उसमें और न्यूट्रल होता है। बाकी 3 लोग जो होते हैं जिस लैंग्वेज की फिल्में हैं उन्हीं में से आते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड आई विल नेम पीपल हु वर देयर दिस टाइम। नॉर्थ पैनल में कार्तिक राजा थे चेयरपर्सन, अरविंद सिंह मेंबर, भरत सिंह छिटोले, कोपिल बोरा, विनोद अनुपम। ये नॉर्थ पैनल का था। ईस्ट पैनल में GS भास्कर चेयरमैन थे, परंजना दत्ता मेंबर थी, श्रीकांत गौतम, KG दास, और वेस्ट पैनल में श्रीलेखा मुखर्जी चेयरपर्सन थी, अभिषेक शाह मेंबर, नीलाभ कोल, प्रमोद पवार, राधेश्याम पेपलवा। ये वेस्ट पैनल था। साउथ 1 पैनल रवि खेमू चेयरपर्सन थे, प्रमोद परसवाने मेंबर थे, अनुपमा सुब्रमण्यन, संजीव पेजोहर और विष्णु मोहनन ये मेंबर थे। और साउथ 2 पैनल में मैं चेयरपर्सन था और धनराज तेजस, नागराज कोटे, मंजुनाथ और जयदीप घोष ये मेंबर थे। और उसके बाद में हमने जो हमारे पास कुछ 290 फिल्म आई थी, 295 फिल्म, 303 थी, उसमें कुछ टेक्निकल उस पर थोड़ा सा उनको रिजेक्ट हो गया। वो 295 फिल्में थी हमारे पास में, उसमें से 66 फिल्म्स जो हैं वो आगे आई हमारे मेन सेंट्रल जूरी में। अब सेंट्रल जूरी में कौन कौन थे? जो 5 चेयरमैन होते हैं, दे आर ऑलरेडी देयर, एंड 5 न्यू मेंबर्स कम इन एंड द चेयरमैन कम्स इन। तो चेयरमैन विपुल शाह थे, वो उनका कुछ शूट शुरू हो रहा है कल से, तो वो चले गए आज सुबह ही। तो चेयरपर्सन वॉज विपुल शाह, कार्तिक राजा, रवि खेमू, धर्म गुलाटी, GS भास्कर, श्रीलेखा मुखर्जी, थंगा दुराई, विजी थम्पी, निशिगंधा वार्ड, संजीव रतन और VN आदित्य। These were the members. Now I'll announce the name of the awards. सबसे पहले मैं स्पेशल जूरी मेंशन का नाम लूँगा, जिसमें एक मैडम ने उसे बताया लैंग्वेज है डिमासा, उसकी एक फिल्म है सैम खोर और उनकी एक्ट्रेस है एमी बरुआ, उनको दिया जाता है। सेकेंड स्पेशल जूरी मेंशन इज़ वांकू, मलयालम फिल्म, डायरेक्टर हैं काव्या प्रकाश। जून, सिद्धार्थ मेनन, मराठी फिल्म है ये। गोड़ाकाठ और अवांछित ये दोनों फिल्मों में एक किशोर कदम मराठी एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको दिया जाता है। तुलसीदास जूनियर हिंदी फिल्म है, उनके एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं वरुण बुद्धादेव। ये जूरी मेंशन के हमारे 5 कंटेंडर थे ये। नाउ द बेस्ट फीचर फिल्म इन ईच ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसमें रजत कमल दिया जाता है और 1 लाख का प्राइज़ दिया जाता है। इन सब फिल्मों को जो मैं अनाउंस करूंगा अभी,
That's the amount and the Rajat Kamal. Best Haryanvi film, Dada Lakshmi. Producer, Anhad Studio Private Limited. Director, Yashpal Sharma. Best Dimasa film, Sam Khor. Producer, Aimi Barua. Production Society. Director, Aimi Barua. Best Tulu film, Jiti Ge. Producer, AR Productions. Director, Santosh Mada. Best feature film in each of the languages specified in the Schedule 8 of the Constitution. Okay. The best Telugu film. The film name is Color Photo. Producer is Amarta Production. Director is Angirakula Sandeep Raj. The best Tamil film. Shivaranjaniyam Innum Silla Pangalam. Producer Hamsa Pictures. Director Vasant S. Pai. Best Malayalam film. Tinkla Yuva Nischyam. The English translation is Engagement on Monday. I might be not pronouncing it rightly. Please excuse me for that. These are little tongue twisters. The producer is Pushkar Films. Director Prasanna Satyanath Hegde. Best Marathi film. Goshta Eka Paithanachi. Tale of a Paithani. Producer Planet Marathi. Director Shantanu Ganesh Rode. Best Kannada film. Dolu. Producer Vadiyar Movies. Director Sagar Puranik. Best Hindi film. Tulsidas Jr. Producer Ashutosh Gawarkar Productions Private Limited. Director Mridul Tulsidas. ये उनका अपना खुद का ही फिल्म है, एक्चुअली खुद लिखा है, उनकी खुद की कहानी है. बेस्ट बंगाली फिल्म अविजात्रिक. प्रोड्यूसर GMB फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड. डायरेक्टर शुभ्रजीत मित्रा. बेस्ट असमी फिल्म ब्रिज. प्रोड्यूसर सविता देवी. डायरेक्टर कृपाल कलिता. बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड स्टंट कोरियोग्राफी अयप्पनम कोशियम. Stunt choreography goes to Raja Shekhar, Mafia Sasi, and Supreme Sundar. Best choreography, Natyam. It's a Telugu film. Choreographer is Sandhya Raju. Best lyrics, Saina, Hindi film. Lyricist है Manoj Muntashir. Best music direction, Ala Vaikuntha Puramallu. Music director, Thaman S. और इसमें बैकग्राउंड स्कोर के लिए अलग होता है, तो बैकग्राउंड ये सॉन्ग्स के लिए अला इसको मिला है, अला वाइकुंठपुरम लो. और म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुराराय पोट्रू. सुराराय पोट्रू, GV प्रकाश कुमार. दैट इज द म्यूजिक. बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट नाट्यम. मेकअप आर्टिस्ट इज TV राम बाबू. बेस्ट डिजाइनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर. इस फिल्म का तानाजी द अनसंग वॉरियर. कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं नचिकेत बारवे एंड महेश शिरेला. बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन कपेला, मलयालम फिल्म है. प्रोडक्शन डिज़ाइन अनीस नादोडी. बेस्ट एडिटिंग शिवरंजनियम इन्नम सिला पेंगलम. एडिटर श्रीकार प्रसाद. बेस्ट ऑडियोग्राफी सॉरी, इसमें भी 3 अवार्ड हैं. It goes, the location sound goes to Dolu. Sound designer, ये location sound is Dolu, and the recordist is Jobin Jayan. Then sound designer award goes to Anmol Bhave for the film Mies Vasant Rao. And re-recordist and final mix track goes to Vishnu Govind and Shri Shankar for the film Malik. It's a Malayalam film. Best screenplay, Soorarai Pottru. Screenplay writer हैं शालिनी उषा नैयर and Sudha Kongara. And the dialogue goes to Mandela, Tamil film. और dialogue writer हैं Madone Ashwin. Best cinematography award goes to Avijatrik. और cameraman हैं Supratim Bhol. Best female playback singer Ayappanam Koshiyam. Singer Nanchamma. Best playback male film is Mies Vasant Rao. Singer is Rahul Deshpande. Best child artist, that is being shared among 3 actually. There's a film called Marathi film called Tak Tak, and the child artist from that film is Anish Mangesh Gosavi. And there's another film called Sumi, that's also Marathi film,
and there are one boy and one girl. And the name is Akanksha Pingle and Divyesh Indulkar. Best Supporting Actress goes to Shivaranjaniyam Innam Seda Pangalam. Supporting Actress Lakshmi Priya Chandramouli. Best Supporting Actor goes to Aparna Koshiyam, Malayalam film. Supporting Actor goes to Biju Menon. Best Actress is Soorarai Pottru. Actress Aparna Balamurali. Best Actor. Now that is a big award and that's also being shared with two people. Surya for Soorarai Pottru and Ajay Devgan for Tanaji the Unsung Warrior. Best Direction. It goes to Aparna Koshiyam. Director is Sachidandan K.R. Unfortunately, I think this director is no more. I think he died some time back. Best Children Film goes to Sumi. Producer is Harshal Kamath Entertainment. Director is Amol Vasant Gole. And the best film on environment, conservation, preservation goes to Tale Danda. It's a Kannada film. Producer is Krupanidhi Creations and director is Praveen Karupkar. And the best film on social issues goes to Funeral. Producer is Before After Entertainment and director is Vivek Dubey. Award for the best popular film providing wholesome entertainment goes to Tanaji, the Unsung Hero. The producer is Ajay Devgan Films and director is Om Raut. Indira Gandhi Award for the best debut film by director goes to Mandela, that's a Tamil film. Producer is Y Not Studios and director is Madone Ashwin. And the best feature film, that goes to Soorarai Pottru. Producer 2D Entertainment Private Limited, director Sudha Kongara. That's all, my friends. Thank you very much. The Dada Saheb Phalke Award will be announced later at a separate function. At a separate briefing, it will be announced later. Now, if you have any queries, the chairpersons of the juries are here to answer your queries. ओडिया को मिला फिल्म राइटिंग में सर इधर बोल रहा हूँ सर सेकंड रो ये सामने अच्छा जो भारतीय भाषाओं में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं आई सर जिसको अवार्ड मिले और कितनी भारतीय भाषाओं की पुस्तकें आई सर भारतीय भाषाओं के 2 पुस्तकों को हमने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया है, एक ओडिया को और एक मलयालम को जी। तो इसलिए आपका प्रश्न थोड़ा सा ये होता है कि पुस्तक को पुरस्कार नहीं मिला, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 2 को मिला और दोनों भारतीय भाषा की ही पुस्तक है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है ना, अवार्ड वाली तो नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि भारतीय भाषा को मिले, कई बार भारतीय भाषाओं को भी मिलता है, कई बार अंग्रेजी को भी मिलता है। अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो 2017 में जब मैं इस सिलेक्शन कमेटी में था तब हमने एक मणिपुर की पुस्तक को दिया था, मणिपुरी लैंग्वेज में। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द बुक, वो हम भाषा के आधार पर पुरस्कार नहीं देते, हम कंटेंट के आधार पर उसको चयन करते हैं। जी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। ऑब्वियसली जितने फिल्मों का रनिंग टाइम होता है उसके हिसाब से होता है। हम लोगों को नॉन फीचर में लगभग 12 दिन लगे फिल्में देखने में और 2 दिन लगे उनके ऊपर डेलिब्रेशंस करके डिसाइड करने में, तो वक्त तो लगता ही है। उन लोगों के पहले ही 5 पैनल होते हैं, उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट होता है, उसके बारे में फिर मेरे मित्र धर्म गुलाटी बताएंगे। ऐसा है, बड़ा टीडियस प्रोसेस है, डिपेंड करता है कितनी फिल्में आई।
इस बार क्योंकि ये 2020 के टाइम का था तो कोविड के टाइम की वजह से कुछ कम फिल्में आई, नहीं तो 400 से ऊपर फिल्में होती हैं. लास्ट टाइम व्हेन आई वाज देयर वी स्पेंट 45 days between the zonal and the central jury. This time I have been, because I have been part of the zonal also, so I have spent almost 32 days. And I can tell you, we have seen films from 8 o'clock in the morning till 10 o'clock in the night. It all depends on the duration. Sometimes the film, most of the South Indian films are longer. Hindi films are shorter, but that's what we've been told. Because the South Indian stars are so big, the audience wants to see them more and more on the screen, so they have to make films like 3 hours long. So that's the reason then, but we have to go through it. This time at least it's 32 days. Last time I spent 45 days here. Any other questions? With this, we come to the end of this briefing. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.